Hello children, this is Poonam Bagga welcoming you in your maths class. We are studying chapter 11 Mensuration from class 8 maths. We started this chapter by learning to find the area of some quadrilaterals and polygons. Then we learned how to find the surface area of a cube, cuboid and cylinder, and then we learned to find the volume of a cube, cuboid and cylinder. Now today we are going to start exercise 11.4 and in today's segment we will be taking up the first 4 questions from it. Before we start, let us once again go through those important formulae. We know that the lateral or curved surface area of a cuboid is given by 2 into L plus B into H, where L denotes the length, B the breadth and H the height of the cuboid. Its total surface area is given by 2 into LB plus BH plus HL, and its volume is given by length into breadth into height. Then we have the cube. Its lateral or curved surface area is given by 4L square, where L denotes the side of the cube. Its total surface area is given by 6L square and its volume is given by L cube. We can also write these formulae as 4 into side square, this one as 6 into side square and this one as side cube, which means side into side into side. Okay, this is the generalized form of these formulae. Then we have a cylinder. Its lateral or curved surface area can be written as 2 pi RH, where R denotes the radius and H the height, and we know that pi is equal to 22 by 7. Its total surface area is given by 2 pi r into H plus r and its volume is given by pi r square H. Now I hope you all have noted down these formulae in your copy and also you have learnt them well, and once you get a clear understanding of how we are getting these formulae, you can very well easily learn these formulae. So first try to get a clear understanding and then obviously these will be very well learnt to you. Now we start with the first question from exercise 11.4. Given a cylindrical tank, in which situation will you find surface area and in which situation volume? Here we have been given a cylindrical tank and we have to examine here, some situations have been given. We have to examine in which situation we will find the surface area and in which we will find the volume. Before we start, let us recall what is meant by volume and surface area. Volume reflects the inner space which is available inside an object. Amount of space occupied by an object is called its volume. तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसके अंदर कितनी स्पेस अवेलेबल है वो वॉल्यूम को रिफ्लेक्ट करता है, और ऐसे में हम जब डिस्कस करेंगे सिचुएशंस तो देखेंगे जिस भी केस में इनर स्पेस की बात हो रही है वहाँ हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. देन सरफेस एरिया, इट मीन्स the area of its surface and the surface is formed by its different faces. तो ऑब्जेक्ट के जो different faces होते हैं उन्हीं के एरिया का सम होता है सरफेस एरिया. तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट के आउटर फेसेस की बात करेंगे तब हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. नाउ द फर्स्ट सिचुएशन, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, कितनी क्वांटिटी होल्ड की जा सकती है टैंक के अंदर किसी भी लिक्विड की. मान लीजिए वाटर स्टोर करना है टैंक के अंदर, तो कितना वाटर स्टोर किया जा सकता है टैंक के अंदर. अब क्योंकि यहाँ बात हो रही है अंदर की स्पेस की, तो ऑब्वियस है हियर वी विल बी फाइंडिंग द वॉल्यूम. देन नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, सीमेंट बैग्स कितने चाहिए टैंक को प्लास्टर करने के लिए. ऑब्वियसली हियर वी विल बी प्लास्टरिंग द सरफेस ऑफ द टैंक. टैंक का जो सरफेस है उसी पर तो सीमेंट लगाकर प्लास्टर करेंगे, और ऐसे में क्योंकि बात हो रही है सरफेस की टैंक के फेसेस की, तो ऐसे में हम यहाँ पर सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. देन टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट. यहाँ मान लेते हैं कि टैंक के अंदर वाटर है और अब इससे हमें छोटे टैंक्स भरने हैं, तो कितने टैंक्स भरे जा सकते हैं ये सिचुएशन है. अब ऑब्वियस सी बात है कि जितनी स्पेस होगी टैंक के अंदर उतना ही ज़्यादा पानी होगा उसमें, और जितना पानी होगा उतने ही नंबर ऑफ छोटे टैंक्स भरे जा सकते हैं. तो ऐसे में यहाँ पर हम डिपेंडेंट है ऑन द इनर स्पेस ऑफ द टैंक. टैंक के अंदर अगर स्पेस ज़्यादा होगी तो उसमें ज़्यादा पानी आएगा, और ऐसे में छोटे टैंक जो भरे जा सकेंगे उसका नंबर ज़्यादा होगा, और अगर टैंक के अंदर स्पेस कम होगी तो कम पानी आएगा, और ऐसे में जो छोटे टैंक भरे जा सकते हैं उनका नंबर भी कम होगा. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द इनर स्पेस ऑफ द टैंक, or we should say on the volume of the tank. And so here in this case also we will find the volume of the tank. Now we have written the answer fairly and let us once again go through them. The first case, the cylindrical tank can hold as per the space available in it.
जितनी स्पेस होगी टैंक के अंदर उतना ही वो होल्ड कर सकता है किसी भी क्वांटिटी को, और ऐसे में हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम. सो इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड द वॉल्यूम. सेकेंड केस, प्लास्टरिंग अ सिलिंड्रिकल टैंक रिफर्स टू प्लास्टरिंग इट्स सरफेस. उसका सरफेस प्लास्टर करेंगे, एंड सो इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक. ओके, नेक्स्ट द थर्ड केस, द स्मॉलर टैंक्स कैन बी फिल्ड विद द वाटर अवेलेबल इनसाइड द सिलिंड्रिकल टैंक. जो स्मॉलर टैंक्स भरे जाएंगे वो किससे भरे जाएंगे? जो पानी अवेलेबल है टैंक के अंदर उसी से तो भरे जाएंगे. तो ऐसे में हम रिलेट कर रहे हैं टू द इनर स्पेस ऑफ द टैंक. दिस रिलेट्स टू द इनर स्पेस और वॉल्यूम ऑफ द टैंक, एंड सो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो वी विल फाइंड द वॉल्यूम. I hope the concept is clear, the answer is clear. And now since we have given the right answer, this tank is also expressing its happiness. Now we move towards the second question. Diameter of cylinder A is 7 centimeter. We can see here we have two cylinders. This is cylinder A and this is cylinder B. Now diameter of cylinder A is 7 centimeter. You can see this is the diameter, it is 7 centimeter. And the height is 14 centimeter. Height आप देख सकते हैं 14 centimeter है. Diameter of cylinder B is 14 centimeter. This one, diameter of cylinder B ये है 14 centimeter and height is 7 centimeter. Height आप देख सकते हैं 7 centimeter है. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? बिना कोई कैलकुलेशन किए क्या आप बता सकते हैं कि किस सिलेंडर की वॉल्यूम ज़्यादा होगी? And then what has been asked? Verify it by finding the volume of both the cylinders. और फिर आप कैलकुलेट करके भी बताइए कि किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, उसको वेरीफाई कीजिए अपने आंसर को, एंड देन चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया. फिर आप दोनों सिलेंडर्स का सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कीजिए और चेक कीजिए कि जिस सिलेंडर की वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है. दिस इज़ द क्वेश्चन. नाउ जस्ट थिंक अबाउट द वॉल्यूम. How can you tell without doing any calculation? The volume of a cylinder is given by pi r square h. तो यहाँ पर ये फैक्टर important है r, because it is being squared, it is being multiplied by itself 2 times. तो जिसकी भी रेडियस ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए. यहाँ पर देखिए रेडियस क्या होगा, it will be equal to 7/2. r1 मान लेते हैं इसको और ये हो गया r2 मान लीजिए. So it will be 14/2 equal to 7. And in this case we have the radius as 7/2. ये है 7. तो यहाँ पे क्योंकि रेडियस बड़ा है तो ऐसे केस में आप देखेंगे जब हम r स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो आएगा 7/2 इंटू 7/2 सेंटर में, और यहाँ आएगा 7 इंटू 7. ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा है तो इसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, और ऐसे में ये जो सिलेंडर है B जिसका रेडियस बड़ा है इसकी वॉल्यूम ज़्यादा आनी चाहिए. Then we will be finding these volumes and then we will be verifying whether this is the case or not. We take the next page here first. Solution. The volume of cylinder B should be greater as the radius of cylinder B is greater than that of cylinder A. क्योंकि सिलेंडर B का रेडियस बड़ा है सिलेंडर A से, तो ऐसे में वॉल्यूम सिलेंडर B की ज़्यादा होनी चाहिए. These are the cylinders. This is cylinder A and this is cylinder B. Now here we will find the volumes of both the cylinders and see whether is it true or not that the volume of cylinder B is greater than that of cylinder A. Here we have finding volumes. First is cylinder A. First we write the radius. Radius of cylinder A. Let us denote it by R1. क्योंकि हमारे पास अब दो सिलेंडर्स हैं तो इनको हम R1 और R2 से डिनोट करते हैं रेडियस को. सो हियर वी हैव R1 7/2 सेंटीमीटर. R1 हमारा हो गया 7/2. 7 सेंटीमीटर तो डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, सो दिस विल बी 7/2 सेंटीमीटर. देन द हाइट ऑफ सिलेंडर A. Let us denote it by H1. It is 14 centimeter. Now volume of cylinder A. Let us find it. It is given by pi R1 square H1. क्योंकि अब हमने यहाँ वेरिएबल्स लिए हैं R1 और H1,
तो उसी के फॉर्म में हमने फॉर्मूला लिखा है. एंड नाउ दिस विल बी इक्वल टू 22/7. R1 की जगह आप लेंगे 7/2 एंड सिंस इट इज़ बीइंग स्क्वायर्ड तो ये 2 बार होगा आपस में मल्टीप्लाई. एंड देन वी हैव H1 हियर एज 14. नाउ दिस 7 and 7 विल बी कैंसल्ड. 2 से ये 22 कैंसिल कर दीजिए 11 टाइम्स. This again will be cancelled 7 times. So here we have 11 into 7 into 7. This will be 11 into 49. Now this will be equal to 9 here and then 539 and we have the unit as centimeter cube. याद रखिएगा वॉल्यूम की यूनिट यही लेनी है. And so this is the volume of cylinder A. Now we will find the volume of cylinder B. We take here cylinder B. First we will write the radius. We give it the variable R2. देखिए ये हाफ हो जाएगा डायमीटर का. डायमीटर है 14 so it will be 14/2 equal to 7 centimeter. Its height, let us denote it by H2. It is 7 centimeter. Now its volume. Volume of cylinder B. This will be given by pi R2 square H2. This will be 22/7. R2 it is 7. So 7 into 7 square कर रहे हैं and then H again is 7. Here we can cancel this 7/7. We have 22 into 7 into 7. This will be 154 into 7. Multiply 7 4s are 28. 2 carried. Then we have 37 and then 10. 1078 centimeter cube. This is the volume of cylinder B. अब आप कंपेयर कीजिए दोनों ही सिलेंडर्स की वॉल्यूम और बताइए क्या सिलेंडर B की वॉल्यूम ज़्यादा है या नहीं सिलेंडर A से. ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर 1078 सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज 539 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये ऑब्वियस है. हियर वी कैन राइट हेंस द volume of cylinder B is greater than that of cylinder A. और ये हमने वेरीफाई कर दिए. देखिए स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था बिना कैलकुलेशन के कि क्योंकि सिलेंडर B का रेडियस बड़ा है तो ऐसे में सिलेंडर B की वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए और यही हमने एक्चुअली फाइंड आउट करके भी वेरीफाई कर दिया है कि सिलेंडर B की वॉल्यूम इट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ सिलेंडर A. Now we will be finding their surface areas also and we will see whether the surface area of cylinder B is again greater than that of A or not. We find here finding surface areas. Again here surface area of cylinder A, it will be given by, we know the formula, 2 pi, here we will take R1 then H1 plus R1. H1 और R1 हम पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं. देखिए यहाँ पर R1 H1 तो बार बार ये नहीं लिखेंगे, सीधे ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर A. And since we are writing the surface area, we mean it by total surface area. So this will be equal to 2 into 22/7. R1, देखिए R1 है आपका 7/2, half of 7. Here we have H1 which is 14 plus R1, it is 7/2. Now 7 and 7 will be cancelled, 2 and 2 will be cancelled, 22 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 14 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 2s are 28 plus 7 upon 2. This is 22 into, here we have 35 upon 2, cancel this 11 time. So here we have 11 into 35. This can be written as 385 and then since this is surface area, so its unit will be centimeter square. Now we find the surface area of cylinder B. Here surface area of cylinder B, this will be given by 2 pi R2 then H2 plus R2. 2 pi R into H plus R ये होता है और अब हम सिम्बल्स ले रहे हैं R2 और H2 for cylinder B. This will be 2 into 22/7. R2 is given by here 7. Then H2 again is 7 and R2 is also 7. Cancel this 7 by 7. 44 here we have into this is 14. Now this can be multiplied.
44 into 14. Here we have 4 4s are 16 and 1. Here we have 44. This will be 6, 1 and 6. So 616 centimeter square because this is surface area. अब आप देखिए क्या surface area भी ज़्यादा है सिलेंडर B का. This is 616 centimeter square and this is 385 centimeter square. तो हम देख रहे हैं जिस सिलेंडर की वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है और हम यहाँ पे लिख सकते हैं we see here the surface area of cylinder B is greater than that of cylinder A. अब हमसे क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया था उस पर चलते हैं. We were asked, just have a look, check whether, let me take it somewhat to the left, check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area, and so we can give the answer yes, the cylinder, we write here, yes, the cylinder with greater volume also has greater surface area. ठीक है, it's okay. The question is clear. Next we take here question 3. Find the height of a cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube. Now here the shape is cuboid. We have been given its base area, its volume is given and we have to find its height. Now is there any formula which connects all these terms? Yes, there is. We know that the volume of a cuboid is also given by the area of its base into height. ये formula हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. You can go through it once again to get a clear understanding. And now first we will assume its height to be say h. जो unknown value है यहाँ पर उससे पहले हम variable से denote करते हैं. So here we take let the height of the cuboid be h. We assume it to be h. Then we have been given the volume of cuboid. जो दिया गया है वो भी लिख लेते हैं. Volume of cuboid is given as 900 centimeter cube. Then we have been given the base area. It is equal to 180 centimeter square. Now we know the formula. We can write now volume of cuboid, it is given by area of base into its height. We should know this formula. And now volume of cuboid, it is 900 centimeter cube. तो इसकी जगह यहाँ हम लिख देंगे 900 centimeter cube. Base area, it is 180 centimeter square. So here we will write in place of area of base, ये लिख दिया है. And height we have taken as h. Now to find this h, we need to take this 180 centimeter square to the LHS and it will go in the division. तो हमें यहाँ मिलेगा 900 centimeter cube upon 180 centimeter square and this will be equal to h. Now simply we need to divide and we will get here h equal to 900 upon 180. 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और हमें पता है 18 5 is 90. So this will be equal to 5 and so h is equal to 5 centimeter. And so we can write hence the height of the cuboid is 5 centimeter. Okay, clear? Next we have one more question. Question 4.
A cuboid is of dimensions 60 centimeter by 54 centimeter by 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? यहाँ बात हो रही है एक क्यूबॉइड की जिसके डायमेंशंस दिए हैं और इसके अंदर छोटे क्यूब्स रखे जा रहे हैं जिनकी साइड है 6 सेंटीमीटर ईच। और ऐसे में क्वेश्चन ये है कि बड़े क्यूबॉइड में छोटे क्यूब्स कितने रखे जा सकते हैं। Let us try to visualize also. We take here, let this be a cuboid. मान लीजिए ये cuboid है जिसके हमें dimensions दिए गए हैं, length है 60 centimeter, then breadth is 54, so here we have 54 centimeter और height है आपकी 30 centimeter. अब इसके अंदर small cubes रखे जा रहे हैं. Let us try to draw them also. मान लीजिए इस तरह से इसके अंदर स्मॉल क्यूब्स कुछ रखे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये कितने ऐसे क्यूब्स रखे जा सकते हैं। इनकी साइड दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो कितने क्यूब्स इसके अंदर रखे जा सकते हैं। सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा जगह होगी उतने ही ज़्यादा छोटे क्यूब्स रखे जा सकते हैं और अगर अंदर की स्पेस कम होगी तो कम नंबर होगा उन छोटे क्यूब्स का जो रखे जा सकते हैं अंदर। तो ये डिपेंडेंट है क्वेश्चन ऑन द वॉल्यूम, इनर स्पेस पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ हमें वॉल्यूम निकालनी होगी। अब दूसरी बात क्या है कि ये जो वॉल्यूम है पूरे बड़े क्यूबॉइड की, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे क्यूब्स की वॉल्यूम में। छोटे छोटे क्यूब्स को हम जगह अलॉट कर रहे हैं कि ये जगह पहले क्यूब की, ये दूसरे क्यूब की। तो हम क्या कर रहे हैं, जो इसके अंदर की स्पेस है उसको इन क्यूब्स में डिवाइड कर रहे हैं और मैथमेटिकली भी हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। बड़े ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे छोटे ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम से। इन दिस केस वी विल राइट हियर that number of small cubes that can be placed in the given cuboid, this will be equal to the volume of cuboid, volume of cuboid upon volume of one small cube. बड़े क्यूबॉइड के अंदर हम छोटे स्मॉल क्यूब्स रख रहे हैं और ऐसे में बड़े क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब से। एंड नाउ हाउ टू गेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? इट विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एंड वी नो द लेंथ इज 60, ब्रेड्थ इज 54 एंड हाइट इज 30। और स्मॉल क्यूब की वॉल्यूम कैसे मिलेगी? इट विल बी 6 इंटू 6 इंटू 6। गिव द रीज़न। सिंस वॉल्यूम ऑफ cuboid, it is equal to length into breadth into height, and volume of cube, it is given by side into side into side. So here we know that the side of each cube, it is 6 centimeter, so we will write here 6 into 6 into 6. अब सिंपल है, जस्ट डिवाइड बाय 6 here, 6 ones are and 10 times it will go 9 times and it will go 5 times. Now this will be 10 into 9 into 5 and this will be equal to 450, and hence how many small cubes can be kept inside the cuboid? This implies 450 small cubes can be kept inside the cuboid. Okay, I hope it's clear. Some students try to get the volume first by multiplying these numbers. कुछ students यहाँ पहले वॉल्यूम अलग अलग फाइंड आउट करते हैं, क्यूबॉइड की वॉल्यूम अलग से फाइंड की, क्यूब की अलग से, और फिर डिवाइड करते हैं। दैट मेक्स द क्वेश्चन वेरी डिफ़िकल्ट। पहले तो हम मल्टीप्लाई करके बड़े नंबर्स तक पहुँचते हैं और फिर बड़े नंबर्स को डिवाइड करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इट्स ऑलवेज़ कन्वीनियंट टू राइट इन दिस वे। आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, बस इस तरह से डिवीजन फॉर्म में ले लीजिए, अपने आप नंबर्स कैंसिल होंगे और आपको आंसर ईजीली मिल जाएगा। सो आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर। In such cases, what we do when we are required to find the number, we divide the volume of the bigger object by the volume of the smaller object. Okay, I hope
With this, the first 4 questions from exercise 11.4 are clear. Soon we will take up the remaining questions in our coming video. Bye for now.